क्वेश्चन देखेंगे आज। टिक द राइट आंसर। Where does the food come from when the seed has not grown its leaves? From other trees, from air. Seed uses its store food from soil. Seed uses its stored food. From which part of the plant can sugar cane be grown? Root, stem, leaves, none of these. Stems. From which part of the plant can rose be grown? Roots, stem, leaves, none of these. Stems. Seed can be dispersed by which of the following agents? Air and water, air, water and insect, air and gravity, all of these. All of these. Seed of dandelion are dispersed through water, wind, gravity, insects. तो आंसर हो जाएगा आपका बी, विंड। फिल इन द ब्लैंक्स। द spot where the seed is attached to the plant is known as hilum. The process of spreading seeds to different places is called seed dispersal. The baby plant in a seed is also known as the embryo. Fourth है, the outside covering of a seed is called seed coat यानी टेस्टा। आपका पांचवा है, each potato has some bud called eye. 6 है, rose and sugar cane are generally propagated by stem cutting. अब पढ़ेंगे हम C, right, T for true and F for false. The part of the embryo that grows into a shoot is called radicle. The part of the embryo that grows into a root is called plumule. False. Most non-flowering plants reduced by the formation and germination of spore. True. Fourth है, crop grown from June to October are called Rabi crops. False. Rice and jute require clay soil with plenty of water. True. Match the following question. राइस कब उगाई जाती है, किस मंथ में, कौन सी फसल होती है, खरीफ क्रॉप होती है। वीट क्या होती है, रबी होती है। पोटैटोस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसका। सीड ऑफ मेपल विंड डिस्पर्जल यानी विंड डिस्पर्जल के कारण इसका सीड ग्रो करते हैं। जैंथियम एनिमल डिस्पर्जल, जैंथियम जो होता है एनिमल के डिस्पर्जल के द्वारा होता है, जो उनके फर में चिपक के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। बाल्सम डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। नेम द फॉलोइंग। outermost covering of seed coat, a seed with 2 seed leaves, dicot, a seed with 1 seed leaf, monocot, a part of a seed which act as food for the developing embryo, endosperm, reproductive unit of non-flowering plant, spore or seed, new plant grown from parts of the parent plant, vegetative propagation. Give 2 examples for each of the following. मतलब हमें इसमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं। प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय स्टीम कटिंग, रोज एंड हिबिस्कस, यानी जो रोज और हिबिस्कस होते हैं ये स्टीम कटिंग के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। प्लांट दैट रिड्यूस बाय रूट,
reproduced by roots. Sweet potato and Dahlia. Plant that reproduce by leaves. Bryophyllum and Begonia. Plants that disperse their seed by wind. Maple or cottonwood. Plants that disperse their seed by explosion. Wood, squirrel, legume. Plant that disperse their seed by water. Lotus and water lily. Definition. Answer the following क्वेश्चन में अब हम पढ़ेंगे डिफिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ यंग प्लांट. नेम एनी 3 थिंग्स दैट अ सीड रिक्वायर टू जर्मिनेट. मतलब जो सीड होते हैं उसको जर्मिनेट करने के लिए क्या